उत्साह है। पिछले समय नीचे थोड़ा से नीचे राजनांदगांव रुक जिले में एक सीट रह गए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट नीचे करो भैया सबको। और राजनांदगांव इस समय भी कार्यकर्ता बिल्कुल तैयारी में, ये सीट भी कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, आपने कहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। रमन सिंह नहीं लड़ रहे हैं, अमन सिंह लड़ रहे हैं। अमन सिंह नहीं लड़ रहे हैं, अडानी लड़ रहे हैं। क्योंकि ये इससे सबसे ज्यादा नुकसान इस कार्यकाल में हुआ था अडानी को हुआ है, और इसलिए उसकी गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ पर है। और इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मतलब अडानी को ताकतवर बनाना। दाऊ जी, Whatever issues are raised, always Honorable Balaji is always leading, be it the MBBS exam, he's always first leading and fighting with the BJP. He's always fighting, no forcing Hindi on us. We are proud Tamilians, we like our language. Hindi is welcome, English is welcome, but you cannot take the Tamil away from the Tamilians. So I think it's a very proud community with a rich legacy. And there is one most big contribution which you all have done, which Kalingar has done, is they have not only taken Tamil language ahead, but even the technical words in schools used were started by Kalingar. So there are technical language. So you have really brought it down to the basics. So you all are really proud of your language. And it's so wonderful to see that there is no caste, no religion. It's only what unites Tamil Nadu is the love for their language. So the way you are proud Tamilians, I am a proud Maharashtrian who has a lot of pride. देखिए, जाहिर सी बात है कि आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात भी बहुत ज्यादा मजरू हैं, और जिस भी इंसान के अंदर एक दर्दमंद दिल होगा वो इस वक्त बहुत ही मायूस है कि जिस तरह से खामोशी इख्तियार की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों पे, बच्चों पे, औरतों पे, निहत्ते लोगों पे बम बरसाए जा रहे हैं, और जिस तरीका से कत्ल गारतगिरी वहां पे हो रही है, हम ये महसूस करते हैं कि आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। यकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता। जो फलस्तीन का मसला है वो एक दीरीना मसला है, और हमने हमेशा ये महसूस किया है कि इस मसले का एक मुनसिफाना हल निकाला जाना चाहिए। फलस्तीन के अवाम के जो हुकूक हैं वो उन्हें वापस दिए जाने चाहिए। जाहिर सी बात है कि उनका मुल्क और उनकी civilized nation on earth, but the root of this violence is the occupation. It's not complicated. It's a settler colonial state imposing apartheid and oppression on an indigenous people, and that's wrong everywhere for anybody. And it has to be true that all the Palestinians want is freedom, and we must support that in equal rights. And I stand up here, I'm so pleased to see so many of my brothers and sisters with big hearts who know the truth. And the Western media has a duty now to tell the truth about what's happening, because I am seeing the worst horrors I could ever have imagined. I grew up in the shadow of the Holocaust, and we said never again, and that means never again for anyone. And I beg of anyone, if they have a conscience, get out there and speak and demand your leaders speak. There seem to be, of course, deep divisions on either side, but you've come out today and you were telling me earlier that this is about being a human, a fellow human being. I'm so thrilled to be here among my brothers and sisters who can see the truth, despite all the propaganda and the lies and the bias and the prejudice that we see in the Western media. It has been, quite frankly, an appalling week. What would you like to see the UK government do now? They must demand a ceasefire. They must demand that Israel stop bombing children and stop burying them under rubble. They must demand a humanitarian corridor so aid and medical supplies can get in. They must demand they have electricity. They must demand that there is food and water. This is an emergency now, a crisis, and people must rise to it.